Hello students. So in this video, we will talk about motion of blocks. Those are connected by massless string. This is a subtopic of laws of motion. सब start करने से पहले free body diagram से start करते हैं. Free body diagram draw करने के लिए let us first consider that we have chosen three masses. Each of them have mass m1, m2 and m3. और हर एक ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं है, तो हमें स्ट्रिंग की मास लेने की कोई जरूरत नहीं है. द थर्ड ब्लॉक है m3. m3 को हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स F से राइट की साइड में कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल F इज आवर नेट फोर्स. Then what is our net mass? Let us consider it is capital M. So this is our net mass. तो net mass क्या है? क्योंकि स्ट्रिंग massless है, net mass होगा सिर्फ ब्लॉक के masses m1, m2 plus m3. Now what will be the acceleration? Acceleration will be net force divided by net mass. This is from Newton's second law. So this will be F divided by m1 plus m2 plus m3. Now coming to this thing, कि ये जो ब्लॉक m1 है इसके ऊपर कितना टेंशन काम कर रहा है. सिमिलरली ये जो ब्लॉक m2 है इसके ऊपर कितना टेंशन काम कर रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को वापस से बना लेते हैं. ये है m1 के साथ कनेक्टेड जो रोप है उसके ऊपर टेंशन काम कर रहा है T1. सो T1 टेंशन से क्या हो रहा है एक्चुअल में, m1 ब्लॉक के एक्सेलरेशन से सामने की साइड पे जा रहा है. दैट मींस m1 into e. So this can be written as m2 plus m3. So this is the tension acting on the rope connecting m1 and m2. Now come to T2 ब्लॉक क्या कर रहा है. T2 ब्लॉक m1 और m2 दोनों को राइट की साइड पे खींच रहा है. तो ये जो T2 टेंशन है, T2 टेंशन को हम लोग कैसे लिखें? T2 टेंशन is something which is pulling m1 and m2 both. उसके लिए हम लोग कैसे लिखें? m1 plus m2 into e. So this is equal to m1 plus m2 into F divided by m1 plus m2 plus m3. Now coming to T3. T3 means क्या? Tension acting on the rope that pulls m1, m2 and m3. T3 will be m1 plus m2 plus m3 into a. तो इसको कैसे लिखो? m1 plus m2 plus m3. एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर रिप्लेस करो that will be F divided by m1 plus m2 plus m3. m1 plus m2 plus m3 is common in both upper side and lower side. So that is equals to force, that is external force that we have applied. तो क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास तीन ब्लॉक है, तीन की जगह चार हो सकता है, दो हो सकता है, कोई भी नंबर के हो सकता है. अगर वो मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है then the net mass is the mass of the blocks. Acceleration क्या होगा? Acceleration will be same for the entire system, that is equal to force divided by mass. Individually जब भी हमें acceleration पता चल जाए then we can find out the tension in each point. So this is everything you need to know about motion of blocks which are connected by a massless string.